अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी A2 क्लासेस बायोलॉजी का फर्स्ट सेशन है मेरे साथ। और जैसा कि आपको मालूम है कि AS के अंदर हमारा जो एक्सपीरियंस है वो एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड नहीं रहा, क्योंकि सडनली कोविड की वजह से जो है हमारा पूरा जो निज़ाम है वो इफ़ेक्ट हो गया, जिसमें हमारी स्टडीज़ भी इफ़ेक्ट हुई और भी बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हुई। तो अब डेफिनेटली उस सिस्टम में हमने अब क्या है कि अब बंद तो करके बैठ नहीं सकते, तो अडेप्ट करने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली उसी वजह से आज हम ऑनलाइन क्लासेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे कॉलेज ने भी, आपके कॉलेज ने भी यही इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों की पढ़ाई में हर्ज ना आए एंड स्टूडेंट मस्ट जो है ना गेट इन्वॉल्व इन देयर स्टडीज़। तो फॉर दैट पर्पस आज से आपकी जो है ना वो एक लेक्चर सीरीज़ शुरू है। जिस तरह से प्रॉपरली क्लास में लेक्चर होता है, बिल्कुल उसी तरह से आपको मैं जो है वीडियो स्ट्रीमिंग के ज़रिए आपके सामने आऊँगा। आज A2 का चूँकि बेटा वी आर गोइंग टू हैव द फर्स्ट लेक्चर टुडे, दैट इज़ व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिफोर एंटरिंग इनटू द A2 syllabus we should know that what is the difference between the previous AS syllabus and the A2 biology syllabus 9700 and how this syllabus is going to be covered, what are the important topics, how the pattern of the exam changes as compared to AS. So these all are the things, aspects जो आज हमने डिस्कस करने हैं। और इसकी डिस्कशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट गिव्स यू चांस टू मेक क्लियर कट स्ट्रैटेजी हाउ टू गेट रेडी फॉर द एग्जामिनेशन, हाउ टू गेट गोइंग ड्यूरिंग द सिलेबस एंड ड्यूरिंग द सेशन। सो पहली चीज़ जो यहाँ पर आपके सामने जिक्र करनी है वो A2 सिलेबस के पॉजिटिव्स हैं। A2 सिलेबस के जो पॉजिटिव हैं वो क्या हैं हमारे पास। देखिए, पहली चीज जो A2 सिलेबस का सबसे बड़ा पॉजिटिव है, एज फार एज आई नो द सिलेबस ऑफ बायोलॉजी एंड एज यू नो आई टीच केमिस्ट्री एज वेल। सो दोनों के अंदर ये कॉमन बेनिफिट है A2 के अंदर, एंड दैट इज द नंबर ऑफ चैप्टर्स। नंबर ऑफ चैप्टर्स बेटा आर मच लेसर, have decreased, the number of chapters have decreased। कैसे डिक्रीज हो गया बेटा कि AS बायोलॉजी के अंदर we were dealing with 11 topics, 11 chapters, whereas in A2 बायोलॉजी we are going to deal with only 8 topics। ठीक है जी। तो हमारी जो A2 बायोलॉजी की डीलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 8 टॉपिक्स से है, जबकि AS में there were 11 different topics जिसको हमने पढ़ना था और उसके ऊपर हमने काम करना था। तो ये पहला पॉइंट आ गया कि A2 बायोलॉजी सिलेबस 9700 के अंदर पहला जो पॉजिटिव है वो ये है कि सिलेबस का नंबर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ चैप्टर द सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड। सेकंड जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि नाउ यू आर ओनली गोइंग टू गिव 2 कंपोनेंट्स इन योर एग्जामिनेशन। 2 कंपोनेंट्स in your examination, one will be P4 and other will be P5। how it is going to be a benefit, because आप AS के अंदर 3 कंपोनेंट्स देते थे, P1, P2 एंड P3। तो इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट अब आपके पास जो एग्जामिनेशन पेपर्स आपने देने हैं उसमें भी आपके पास एक पेपर की बचत हो गई है, आपको 2 पेपर्स में अपेयर होना है, P4 एंड P5। डेफिनेटली इट इज द फर्स्ट सेशन, तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट P4 एंड P5 इन डिटेल इंशाल्लाह ताला एज द सेशन विल प्रोसीड। तो 2 कंपोनेंट्स हैं। तो बेसिकली अप टिल नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट A2 सिलेबस के जो पॉजिटिव्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव क्या है कि इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ चैप्टर्स वी आर गोइंग टू फेस रिड्यूस नंबर ऑफ चैप्टर्स, या small quantity of chapters, only 8 topics we are going to cover in A2 biology। Second is that you are going to give only the 2 papers P4 and P5 in your examinations। तो आपके पास जो पहले 3 पेपर्स की जो एक हेडेक थी वो अब कम हो गई है। थर्ड चीज जो A2 बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पॉजिटिव है, आई शुड कंसिडर, आई मस्ट कंसिडर, आई ऑलवेज कंसिडर इट वेरी पॉजिटिव, दैट द सिलेबस इज हाईली कॉन्सेप्चुअल एंड it is relatable to us। ठीक है, the syllabus is very relatable to us।
which means that we are not going to talk about plants in much more detail. We are not going to talk about bacteria or viruses, because these are the topics in biology जहाँ से student जो है अपने आप को relate नहीं कर पा रहे होते, and that is why they start losing their interest in these kind of topics. Here we are going to see a lot of topics which are directly connected to us human beings. For example, our reproductive system, our musculoskeletal system, our neurology, our kidney excretory system. So these all are the systems जो हम अपने बारे में पढ़ेंगे, and that is why, although these are highly conceptual topics, but students get very much interested in the learning of these topics, and that is why they do not lose their interest in the topics. तो definitely ये भी एक बहुत बड़ा positive है जो हम A2 syllabus की biology में देखते हैं. ये 4 positives highlight करने के बाद I should talk about some negative points of the syllabus. Number one, not exactly the negative points, लेकिन definitely जो आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा. The first thing that you need to remember in this aspect particularly is that the syllabus is highly complicated. It is very much complicated. You have listened to me कि जो है ना 8 topics हैं, तो शायद आपको first impression में आया हो कि चलो शुक्र है syllabus कुछ कम हुआ. But अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग द चैप्टर और जो है ना आपको जब लेक्चर डिलीवर किया जाएगा तो यू विल clearly see that there is a lot of detail in every single topic and a lot of concept is there, and that concept should be listened very proper in a very proper manner and conceptualized in a very proper manner. Otherwise you are going to face lot of difficulties in A2 biology, because concept based चीजें हैं, relatable चीजें हैं. अगर आपने एक concept miss किया या एक concept आपको let's suppose समझ में नहीं आया तो definitely फिर उसी से related जो concepts हैं उन सब में आपको discrepancy पैदा हो जाएगी, और वो तमाम चीजें आप जो है वो relate ना करने की वजह से overall एक पूरे topic के लिए जो है ना एक बुरा impression लेकर आगे बढ़ेंगे. तो डेफिनेटली जो पहली चीज आपको समझनी है वो ये कि these topics are very high yield, very important, very conceptual, and that is why you have to pay a lot of attention to your every lecture, ताकि आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आप हर चीज को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली याद रख सकें. ठीक है जी. नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है वो क्या है, इस चैप्टर के चैप्टर्स छोटे, नंबर ऑफ चैप्टर्स कम तो हैं, बट चैप्टर्स की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है. एक एक चैप्टर में मल्टीपल यूनिट्स जो है ना हम उसमें पढ़ रहे होंगे. तो डेफिनेटली इन दैट पर्टिकुलर मैनर भी जो है A2 बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा मुश्किल या बड़ा लगने लगता है बच्चों को. थर्ड चीज जो यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए जरूरी है वो ये है कि A2 बायोलॉजी के अंदर एक बहुत कॉमन जो इशू आता है वो ये आता है कि देखिए, अगर आपको याद हो कि इन AS बायोलॉजी पेपर 1, बेसिकली पेपर 1 क्यों बच्चों को ज़्यादा इजी लगता था या क्यों ज़्यादा मज़ेदार लगता है प्रैक्टिस के हवाले से, बिकॉज यू हैव लर्न द कॉन्सेप्ट एंड नाउ जस्ट यू आर यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट टू आंसर MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ठीक है ना. तो यू वर गिवन अ सिनेरियो और उसके बाद फिर आप उसको रीड करते थे, 4 ऑप्शंस होते थे, आप कर लेते थे. लेकिन जब आप P2 बायोलॉजी करते थे तो वहां पर बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते थे. वाई? बिकॉज they had the concept at that time, but when they start translating that concept onto their copies, onto their answer sheets, so what we observe as the teachers, that they fail to write down that concept in a proper way, or the way in which the question is asked. So if you had that problem in A2 AS, then you are going to face another challenge in A2 biology, as P4, which is the major component of 100 marks, taken 100 marks. It's a very lengthy paper because you haven't given a paper consisting of that much marks. तो इसलिए 100 marks का जो पेपर है, ये सारा का सारा पेपर ही थ्योरी है. ठीक है ना. सारा का सारा theoretical concept है, and you should not only learn the concept, you have to learn exactly how to write that concept in a way the question is asked, and how to properly remember that thing. बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लिख दिया फ्रेश कॉन्सेप्ट को, उसके बाद दोबारा अगर वही चीज किसी और एंगल से आ गई तो अब आप जो है वो कंफ्यूज हो गए. तो यू हैव टू मेमोराइज इट, यू हैव टू रिमेंबर इट, दैट हाउ आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन ऑन माई आंसर शीट. इफ वी हैव लर्न समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, देन यू शुड बी एबल टू नो एग्जैक्टली हाउ टू ब्रेक डाउन दैट आंसर into steps or points, so that you can score maximum or points in your answer. So this is another
स्मार्ट चैलेंज जिसमें हमारे बच्चे जो है ना वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं A2 बायोलॉजी के अंदर। अगर मैं आपको इन जनरल बताऊं A2 बायोलॉजी का जो मेरा एक्सपीरियंस है अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो स्टूडेंट्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड ऑलवेज इन A2 बायोलॉजी, दे नेवर लूज देयर इंटरेस्ट, सिवाय कुछ आखिर के चैप्टर्स हैं जिसमें थोड़ा बहुत जो है ना, चूंकि वो ड्राई थ्योरी है तो उसके अंदर फिर भी जाकर थोड़ा सा इशू आ जाता है बच्चों को। अदरवाइज जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, जो बड़े चैप्टर्स हैं, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं, वी इंजॉय टुगेदर, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हम अच्छे से मज़ा करके पढ़ रहे होते हैं। एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आई कैन रिलेट थिंग्स डायरेक्टली टू द क्लिनिकल सिनेरियोज, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि A2 बायोलॉजी सिलेबस हैज़ a very much important role to play in your university life. First year of your university, जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो और फर्स्ट सेमेस्टर आपका मेडिसिन का शुरू होता है, चाहे आप BDS कर रहे हो, चाहे आप MBBS कर रहे हो, चाहे आप फार्मेडी कर रहे हो, चाहे आप फिजियोथेरेपिस्ट में DPT कर रहे हो, जहाँ पर भी आप जाते हैं, जो बेसिक सब्जेक्ट जो आपके फर्स्ट ईयर में आता है वो आता है फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो दीज आर द सब्जेक्ट्स जिनके जो कॉन्सेप्ट बेसिस हैं वो आप A2 बायोलॉजी में पढ़ के जाएंगे। तो एज ए स्टूडेंट आई कैन अश्योर यू कि अगर आपने A2 बायोलॉजी पे अच्छे से फोकस किया तो ऑब्वियसली दैट फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ योर यूनिवर्सिटी लाइफ इज गोइंग टू बी लाइक अ रिविजन ऑफ द A2 बायोलॉजी सिलेबस। तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा ये टॉपिक्स को पढ़ना, ठीक है जी। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इंटरेस्ट लूज ना करें। अगर ये चीज़ आपको रिकॉर्डिंग्स की फॉर्म में पहुंच रही है तो ऐसा ना हो कि आप उसको इंटरेस्ट लूज कर जाएं। बेसिकली आवर ऑब्जेक्टिव इज दैट यू कैन लिसन टू आवर वीडियोस अगेन एंड अगेन, ठीक है, बार बार उसको आप रिवाइंड फॉरवर्ड करके देख सकें, ताकि अगर कोई चीज़ डेफिनेटली हम फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे तो अगर कोई भी इशू रह जाता है तो यू कैन रिवाइज दैट अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन कॉन्सेप्चुअलाइज ईच एंड एवरी बिट ऑफ द लेक्चर इन अ वेरी प्रॉपर वे, ठीक है जी। तो दीज वर सम एस्पेक्ट जो हमने आपको इनिशियली बताए। अब अगर हम आगे चलें बेटा, लेट्स सपोज वी मूव फॉरवर्ड नाउ टू द नेक्स्ट शीट एंड थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं अपने कंपोनेंट्स की। तो as I have told you, we are going to face two components, ठीक है। number one is the P4 and number two is the P5. You are going to give exams of these two components, P4 and P5. P4 is basically theory and theoretical paper, and this paper is basically of planning and analysis, ठीक है जी। So first talk about this first component of P4. We are going to talk about this P4 first. Now, as I have told you, this paper comprises of 100 marks and it's quite a lengthy paper. Second thing is that this paper consists of two sections, section A and section B. Section A is of 85 marks and section B is of 15 marks. We often call this section an essay type questions. Basically the answer is required in form of an essay, and 85 mark wala jo part hai, first part hai, that in that particular part there will be a mixture of long, short, one line, one word answers and 3 lines, 2 lines answers, or 5 marks के जो समराइज्ड एक्सप्लेनेशन वाले आंसर्स हैं, ठीक है जी। इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ P4 what we see, you will be given 2 hours to attempt this paper, and most of the students fail to complete their exams, fail to complete their paper, and that is why the average threshold in this paper for an A grade remains in between 72 to 77 marks. 72 to say this is a very good threshold, ठीक है, because if we see in chemistry A levels or physics A levels, then we observe a much lower value like 67, 63, 65 for an A grader, ठीक है। तो 72 to 77 marks का हमें एक average threshold देखने को मिलता है A grade achieve करने के लिए। तो it means that we have enough amount of window in terms of losing marks, but obviously we are not going to prepare in this way कि हम 72 से 77 marks के लिए तैयारी कर रहे हैं, बल्कि हमें इस तरह से prepare करना है कि हमारी तैयारी जो है 100 marks की पूरी हो और फिर हम उसमें स्मार्टली चीज़ें मैनेज करें। एंड डेफिनेटली जब आप हमारे साथ
तैयारी करोगे तो यू विल गेट कॉन्फिडेंस कि आप जो है इजीली 80 अबव मार्क्स ले जाओगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर यू इंशाल्लाह इन दैट पर्टिकुलर वे, ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई हमारी P4 के वाले से। तो आई शुड समराइज इट नाउ कि P4 इज द मेजर कंपोनेंट, 100 मार्क्स। ए लेवल का ग्रेड बनाने के लिए आपका सबसे बड़ा वेटेज जो है इसी का ही है। अब फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन आप जानते हैं एएस के जो आपके प्रेडिक्टेड ग्रेड्स आ रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो A2 का ही जो ग्रेड है वही आपका ए लेवल का ग्रेड बनेगा, इसीलिए आपका P4 की जो वैल्यू है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। आई पर्सनली थिंक दिस टाइम P4 इज गोइंग टू काउंट 80% इन योर ग्रेड, ठीक है। तो इफ अ स्टूडेंट has scored very good in P4, it means he or she is going to inshallah take A grade easily. Then now let's talk about P5. This P5 is basically a paper consisting on the concepts of planning and analysis. It is to check the skills of the student to plan an experiment, to analyze the data, ठीक है जी। This is a bit tricky component. This is of 30 marks, ठीक है जी। 30 marks you have to attempt it in 1 hour, ठीक है जी। Lecture has to be complete, student has to complete the paper in 1 hour, ठीक है। 30 marks है। Normally this component comprises of, I should write it in a separate screen. तो normally the student have to face 3 questions, question number 1, 2 and 3, ठीक है, and of different marks. For example, there are papers where the question, there are only 2 questions in the paper, and if this is the case, then 18 to 12 marks वाले सवाल आते हैं, and if this is the case, so it could be of 12 marks, it could be of 8 marks, and it could be of 10 marks. Any division can be expected in this P5 component, ठीक है। The average threshold in P5 is 20 to 22 for an A. For an A, you have to score 20 to 22 out of 30 in this component. So these are shorter details that I should have given to you before starting the syllabus. So up till now, what we have discussed, that A2 biology is in many ways considered mentally is easier than AS, because in terms of number of topics, conceptual है, interesting है, ठीक है जी। But on the other hand, complicated है। अगर concept अच्छे से समझ में नहीं आया तो it is going to be a big problem for you guys. फिर इसी तरह अगर concept समझ में आ गया लेकिन उसको translate करना नहीं आया सही से, step by step, point wise लिखना नहीं आया, again that is going to be a problem for you guys. So you have to look all these aspects in order to get a good grade, because A2 का इस दफ़ा importance AS के बच्चों की ज़ाहिर है, आप predicted grade लेकर आ रहे हो पीछे से, तो आपके लिए importance जो है वो और ज़्यादा है। तो I hope कि जो है ना आप इसमें smartly हम तैयारी करेंगे और आप इसको हल्का नहीं लेंगे और आप इसको बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो seriously consider करते हुए तैयारी करेंगे, जमा नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो प्लान है वो क्या होगा सिलेबस को पढ़ने का, तो आई शुड जस्ट टेल यू दैट ऑल्सो। देखिए बेसिकली वी आर इंशाल्लाह गोइंग टू कंप्लीट आवर सिलेबस इन जनवरी, ठीक है। जो बच्चे 2021 में देने जा रहे हैं मई जून एग्जाम इंशाल्लाह ताला, तो वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर एवरी बिट ऑफ डिस्कशन इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ जनवरी, एंड इन दैट पर्टिकुलर मैनर जब हमने इस तरह से प्लान किया हुआ है, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, not chapter number 1, chapter number 3, which is the homeostasis. Homeostasis, you are familiar with this word, you have learned this thing in short in your O-level syllabus. तो homeostasis से बेटा हमने start करना है। और why we are not starting with chapter number 1 and chapter number 2, because those are the chapters which are although they are shorter, but the problem with those chapters is कि वो बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। बायोकेमिस्ट्री इज समथिंग जो कि अभी आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी हुई है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये आपने ओएस में पढ़े होते हैं, बट उसमें भी वो इंटरेस्ट लेवल नहीं होता। प्लस ये कि यहाँ पर जो बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं ये थोड़े से और अपर लेवल के हैं, तो ऑब्वियसली आई डू नॉट वांट कि आप इनिशियली ही इसको मुश्किल समझने लग जाएं या इनिशियली आप इंटरेस्ट लूज कर दें। तो डेफिनेटली फॉर दैट रीजन आई ऑलवेज स्टार्ट आवर सिलेबस फ्रॉम होम्योस्टेसिस चैप्टर नंबर 3. Although this chapter is going to be a very lengthy chapter, but inshallah you are not going to lose your interest. Plus this chapter is very interesting and easy. ठीक है, जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स बनते रहेंगे यू विल फील कि ये चैप्टर बड़ा मजेदार भी है और इजी भी है। ठीक है, द ओनली जो इसका जो मुश्किल पार्ट है वो है क्या है कि ये चैप्टर लेंदी है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू इंशाल्लाह बिगिन आवर सिलेबस फ्रॉम होम्योस्टेसिस
और कोशिश करेंगे कि फर्स्ट मंथ में हम इसको ख़त्म कर लें, सेकंड मंथ में जो है हम इसके बाद चैप्टर 4 करते हैं और फिर उसके बाद चैप्टर 1 और 2 करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा वे होता है सिलेबस को एंड करने का वो इस तरह से है कि हम फर्स्ट मंथ में होम्योस्टेसिस करेंगे, सेकंड मंथ में जो है हम जो है इंशाअल्लाह ताला कोऑर्डिनेशन कर रहे होंगे जो कि 4th चैप्टर है, फिर हम जो है वो थर्ड मंथ में 1 भी कर लेंगे इंशाल्लाह और 2 भी कर लेंगे, बिकॉज दो चैप्टर्स आर स्मॉलर एज कम्पेयर टू दीज चैप्टर नंबर 3 and 4। एंड उसके बाद 4 चैप्टर्स होने के बाद you are going to have your midterm most probably हो जाता है 3 मंथ में, आमतौर से 4th मंथ या 5th मंथ में जाके आपका मिड टर्म होता है। तो फिर हम चैप्टर नंबर 5 को भी आधा जो है वो इंक्लूड करते हैं मिड टर्म के अंदर। नॉर्मली मेरे हर बैच के अंदर जो है वो जब मिड टर्म्स हो रहे होते हैं, चाहे स्कूल्स में हो रहे हो चाहे वो बच्चे जो है ना वो प्राइवेटली दे रहे हो, तमाम बच्चों को हम इसी तरह रेडी करते हैं कि मिड टर्म के टाइम इन दिसंबर तक जो है उनका तैयार हो जाए इतना हिस्सा, first 4 chapters and the half, at least a half of the 5th चैप्टर। ठीक है, और अच्छा मजे की बात ये है कि ये जो 1 से चैप्टर नंबर 5 है यही चैप्टर्स हैं जो थोड़े से बड़े भी हैं और कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, कॉन्सेप्चुअल भी हैं। और इसके बाद जो चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 है ये चैप्टर्स इनमें बहुत बड़ा कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन बस दरमियानी लेंथ के चैप्टर्स हैं, थ्योरेटिकल ज़्यादा हैं, थोड़े से टॉपिक्स भी ड्राई हैं। तो लेकिन होता ही है कि जब आपने इनिशियली जो सारा जो लोड था वो कवर कर लिया होता है और एग्जाम करीब आ रहे होते हैं, तो वो एक एग्जाम स्ट्रेस और एग्जाम प्रेशर के अंदर आप फिर उसको भी उसकी ड्राइनेस के बावजूद भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो भी आपको आ जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कि A2 सिलेबस का आपको एक जनरल आइडिया आपको मिल गया होगा। और फिर मैं रिपीट करूंगा कि बिकॉज AS एग्जाम में आपको प्रेडिक्टेड ग्रेड्स वाली चीज़ पे डाला गया है, तो A2 एग्जाम्स इस बार हर साल से ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाते हैं, क्योंकि अगर आपने A2 में कोई भी आपकी जो है ना वो कमजोरी रह गई तो ऑब्वियसली आपका पूरा A लेवल ग्रेड खराब हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि AS के अंदर बच्चे ने कुछ अगर लेट्स सपोज अच्छा ग्रेड स्कोर किया और A2 में कुछ मसला हो गया और A2 के अंदर जो है ना उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया उस बच्चे ने किसी भी सब्जेक्ट में, तो जाहिर है वो एवरेज आउट कर जाती हैं चीज़ें। लेकिन अब आपके पास एवरेज आउट करने की कोई चीज़ नहीं है। अगर आपका AS में प्रेडिक्टेड ग्रेड A भी आ गया है, अगेन उसकी कोई जो है कोई वैल्यू नहीं है, और अगर आपका A नहीं आया है, D आ गया है, अगेन उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो वट एवर यू हैव डन इन योर AS, चाहे तुमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, लापरवाही की थी, जो भी किया था, अब उसको आपने पीछे डाल देना है, बालाए ताक रख के उसको आपने अब आगे चलना है और आगे आपने बिल्कुल एक नई शुरुआत करनी है और बिल्कुल डे 1 से आपने प्रॉपर्ली फोकस करके काम करना है। अच्छा, काम कैसे करना है? तो एज वी आर गोइंग टू फेस ईच अदर इन फॉर्म ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, तो हमने आपको सॉफ्ट कॉपी में भी पास पेपर जो हैं वो देने हैं, साथ ही साथ हमारी अपनी जो हार्ड कॉपीज़ हैं, बुक्स हैं पास पेपर्स की और नोट्स हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे जो आप कॉलेज के काउंटर से आकर रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये फैसिलिटी कॉलेज के काउंटर वाली नहीं होगी तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वो आपको आपके घरों तक पहुँचा दिए जाएँ। ठीक है जी, तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था अबाउट योर A2 बायोलॉजी सिलेबस। ओके गाइस, तो इंट्रोडक्शन जो है हमारा वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है। आपको अंदाज़ा हो गया है कि A2 के अंदर हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं और किस तरह से हमने जो है तैयारी करनी है। A2 बायोलॉजी के सिलेबस के पॉजिटिव्स क्या हैं और A2 बायोलॉजी सिलेबस के नेगेटिव्स क्या हैं। तो अब ये तमाम जब हमें बेसिक आइडियाज़ मिल गए हैं तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ विद आवर चैप्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया, वी आर गोइंग टू बिगिन विद चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम द बुक। And why we are selecting this chapter? The simplest answer is this chapter is going to be easily relatable for you guys, because you have already learned some of the part of this chapter or this topic in O-levels biology, and this chapter is easy as well. The concept is interesting and easy as well. The only problem with this chapter and chapter number 4 that these are too lengthy chapters. That is why the students consider it as hectic ones, but inshallah you will keep your interest alive इंशाल्लाह टिल द एंड। तो होम्योस्टेसिस जो है आपका, ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पे होम्योस्टेसिस आपको दिख रहा है। ठीक है जी, तो होम्योस्टेसिस में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस से क्या मुराद है? तो होम्योस्टेसिस बच्चे, व्हेन वी टॉक अबाउट इट, तो होम्योस्टेसिस इज द वर्ड which is derived from two other words, homeo and stasis. Homeo means internal and stasis means constant. So basically
इंटरनल कांस्टेंट, अब इन दोनों वर्ड्स को अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ जो इंटरनल से मुराद है वो है इंटरनल इन्वायरमेंट. सो होम्योस्टेसिस मीन्स टू कीप योर इंटरनल इन्वायरमेंट एट अ कांस्टेंट लेवल, टू कीप योर इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी एट अ स्टेडी कंडीशन, एट अ कांस्टेंट कंडीशन, यानी irrespective of the external environment, whether the temperature is changing, whether any of the external factor is changing, but internal environment must remain at a constant or a steady state. This we call homeostasis. So homeostasis is by definition, it is to maintain the internal environment of an organism at a constant level. ठीक है जी. तो होम्योस्टेसिस हम किसे कह रहे हैं? इट इज टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट irrespective of the external conditions, no matter what is the external condition at any time, but internal environment in all aspects should remain same or constant. तो होम्योस्टेसिस का सबसे पहले हमने डेफिनेशन समझ लिया. Now the first question is that why do we need that? Why do, when external environment is keep on changing, why do we need to maintain internal environment at the same level, whether it is summer or a winter season, whether it is dry weather or whether it is humid weather? Why our body is trying to maintain the internal environment at same level or constant level? The answer, the student must able to answer this question, okay, why it is necessary. Let's look at the few aspects. I'm going to tell you, if, let's suppose, if, just imagine for the time being that if you are not able to maintain something, what is going to be the consequences of that? For example, if I say that a person is not able to maintain the glucose level of blood. For example, a person is not able to maintain the glucose level, which is the part of the internal environment. If that person is not able to maintain the glucose level in the normal range, what could be the consequences? So there could be two kinds of consequences. Number one, increase glucose level, and number two, decrease glucose level. If we talk about glucose level, increase of glucose level, so as you all know that our cell does not contain cell wall, and for example, I say that this is the, let's suppose, cell, this is cell, okay, this is the nucleus, and for example, in this external environment, which is extracellular environment, in this environment the glucose level increases. So ultimately, when this happens in the external environment or the blood or the plasma, the concentration of this fluid, that is plasma, is going to increase, which will make this environment hypertonic, ultimately causing the water of the cell to move from higher to lower potential, because water, when see that there is a low water concentration in the external environment and there is more water concentration in the cell, then water automatically starts moving via osmosis from cell to the external environment. So what is the disadvantage of this process? When water will escape out of the cell, you know well from your AS information that the cell is going to shrink. The cell is going to plasmolyze. The process we call is plasmolysis. So basically, when cell is plasmolyzed, almost every metabolic function the cell can perform will stop, ultimately causing the cell death. So we have only seen one consequence of increased glucose level in the external environment. So when glucose level will increase, I should point it out, क्या होगा? Ultimate consequences क्या होंगे? Extracellular environment will become hypertonic, and water moves out, causing cell to plasmolyze. ठीक है जी. So this happens when the glucose level is increased. Now let's see what happens if the reverse happens, which means the glucose level it's decreased. For example, glucose level is decreased. As you all know that glucose is the major fuel in your body. Every metabolic reaction or every energy generation reaction has to do something with the glucose. Glucose is oxidized to give you energy.
So let's suppose if glucose is missing, if glucose level is not that much in your body, obviously your cells are not going to get enough amount of glucose, so that when they do not get enough amount of glucose, they will not be able to oxidize that glucose to get enough amount of energy, especially your brain, because your brain, your neurons needs the highest value of energy in your body at any time, at any cost. So let's suppose that glucose level is not high. आपने देखा है बेटा कि जब आप रोजे से होते हैं, फास्टिंग कर रहे होते हैं और ग्लूकोज आपका डाउन हो जाता है, या आप रोजे के अंदर हैं, या आपने कुछ खाया नहीं और उसमें आपने कोई बहुत हैवी वर्क लोड कर लिया जिसमें ग्लूकोज की कंजम्पशन बहुत ज्यादा आपने कर लिया है, तो you start feeling dizzy, and sometimes in worst case scenario you get faint also. Why you get faint? Because when glucose level falls to that range जहां पर आपके ब्रेन को भी या न्यूरॉन्स को भी इनफ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज नहीं मिल रहा, तो जो आपका कॉन्शियस ब्रेन होता है वो अपनी एक्टिविटी लूज करने लग जाता है, एंड दैट इज व्हाई यू स्टार्ट फीलिंग टायर्ड अ लॉट. तो what we see that when glucose level is decreased, what are the consequences? Then not enough fuel, and therefore decrease metabolic rate, decrease production of energy in form of ATP. ठीक है, consequences would be lethargy, dizziness, and etc. So we have only looked at one aspect of the homeostatic mechanism, that homeostasis में तो आपने हर चीज को maintain करना है उसकी normal range के अंदर. We have only now looked at one aspect कि भाई अगर ग्लूकोज जो कि एक बेसिक सॉल्यूट है, अगर उसका लेवल बढ़ जाता है तो देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज, कम हो जाता है देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज, एंड दोनों ही हमारे लिए नुकसानदेह हैं. सो बेसिकली व्हाट इज द सॉल्यूशन? वी हैव टू कीप ग्लूकोज इन द नॉर्मल रेंज. ठीक है, इसको नॉर्मल रेंज में रखना है. अच्छा, सिर्फ ग्लूकोज की बात नहीं है. लेट मी टेल यू वन मोर एस्पेक्ट वेयर वी विल सी के कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे अगर लेवल्स ऊपर या नीचे हो जाए. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट वाटर. वाटर इज वेरी एसेंशियल. वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, as you all know. But let's see what happens if the water level decreases below the level and if it is increased above the level. So water is very essential. Your body 60 to 70% composition of your body is on water. But what happens that when water level of water starts increasing? So let's look at first aspect when water level starts increasing. Okay, let's suppose you have drink a lot of water or a lot of fluid is adding in your body. So what happens then? Beta, again, let's consider cell. For example, this is cell and this is nucleus, and water in the external environment is increasing. What is going to happen? That water will start moving into the cell. Water will start moving into the cell and ultimately causing the cell initially to swell up and then burst. Cell is going to, yes please, cell is going to, as you know, we don't have cell wall. Cell is going to rupture, cell wall is going to rupture, and cell death is going to occur. So this is a simple, very simple consequence. Then when water level increases in the extracellular environment, water start entering into the cells, causing the cells to burst. Secondly, what happens if water level is decreased? If water level is decreased, what is going to happen is that अगर water आपके पास नहीं है, cell, water is the basic medium. Water is the basic medium for almost all the metabolic reactions. Water is responsible to carry different enzymes and hormones from one place to another place. And when water is not there, all these actions cannot be done. And what will be the consequences of this absence of water or this decreased level of water? Dehydration, lack of transport of enzymes, lack of transport of proteins, and ultimately that is going to have a great impact on your body, negative impact. ठीक है जी.